Hi guys, welcome back to our channel, No Sitting on the Fence, where we are going to be discussing about all things about Manchester United. Once which used to be the only club in Manchester is now in jeopardy of becoming one of the clubs in England which might not even be in the top four. So coming straight to the agenda, I'll want to introduce you to the to our panelists. Vidush is a Manchester United fan through and through, and Aditya Laskar is also a Manchester United fan, and we also have a Liverpool fan here in Aditya Gupta. So, first question, guys: uh, do you think United will finish in the top four? I'll come to Vidush first. Do you think United will finish in the top four? Yes, I think United will finish in the top four because let's face it, Arsenal or Tottenham है हमारे competition में. Yes, Arsenal 4 points. They are 4 points ahead with one game in hand. But उनका देखा जाए तो like आगे एक block of fixtures है जहाँ पे they face Chelsea, United and West Ham. I think that will be the phase where it will Tottenham as well. Tottenham, yeah, that's the game in hand. उस टाइम में हमें पता चल जाएगा कि क्या बोलते हैं. We'll definitely find out Arsenal then. I guarantee that. So United have the firepower. United have the attackers. United has Cristiano Ronaldo. That's the main thing. Little tweaks here and there. I feel that United can perform and United will finish top four by the end of this year. So, to talking about the fixtures now, I'll come to Laskar. So, Laskar, have you seen enough consistency in United to think that they'll finish in the top four? Because I mean, you go in and beat Spurs on a day, but then there's the previous week or the 2 weeks before you draw 0-0 at Old Trafford against Watford, who are struggling for points right now. So, तेरे हिसाब से do you think कि United top four में finish कर पाएगी या नहीं? According to me, like as you said, कि consistency is the biggest problem. जैसे विदुष ने बोला कि ठीक है, Spurs और Arsenal अपने आप में जो करना है कर रहे हैं, but the point is how consistent are we? Like we are not even like winning games, and there is no like a proper formation. We have like हमने just start किया like 4-5 matches से एक same formation खेलना, and उसके बाद like जहाँ पे भी हम एक दो गेम जीतने जाते हैं, कोई एक ऐसा गेम आ जाता है एंड वी लाइक लूज आवर शिट, वैसे 4-2 हार जाएंगे, 5-0 हार जाएंगे, जो भी है. सो कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट पॉइंट, एंड हमको अपना देखना है. मैं आर्सेनल, क्योंकि यार आर्सेनल एक गेम हारे या दो गेम हारे, उनके पास गेम्स इन हैंड है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा. अगर हम कंसिस्टेंटली नहीं जीतते हैं, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर हियर, कि अगर हम कंसिस्टेंटली नहीं जीतेंगे तो हम टॉप फोर में नहीं आएंगे. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, आई डोंट थिंक यूनाइटेड अभी इस टाइम पे इतना कंसिस्टेंट है और रहेगी कि वो टॉप फोर में आए. आई डोंट सी यूनाइटेड इन द टॉप फोर, अनफॉर्चुनेटली. Okay, so वो ये बहुत honest opinion है from a United fan. I know you will want United to finish, but anyway, that's why I said, coming to someone who will not want United to do well, so Aditya Gupta, who is a Liverpool fan. So भाई तुझे क्या लगता है? Do you think United can finish in the top four या फिर ये season write off proper एकदम? Write off है मेरे लिए तो. मुझे लगता है कि आर्सेनल फिनिश करेगी, टॉटनहम भी नहीं करेगी और यूनाइटेड भी नहीं करेगी, क्योंकि एक तो आर्सेनल और यूनाइटेड दोनों को एक दूसरे के साथ खेलना है, तो वो गेम तो एक उनका हट जाता है. उनके पास दोनों के पास चेल्सी बचा हुआ है. हाँ, दोनों को चेल्सी बचा है और टॉटनहम के पास आर्सेनल के पास टॉटनहम एक्स्ट्रा गेम है. तो गेम्स तो ऑलमोस्ट सेम है, पर जो नैरेटिव है अभी, जो फैंस का बिलीफ है और जो स्टेडियम में एटमॉस्फेयर है अराउंड द क्लब, वो मेरे को लगता है आर्सेनल का भी बेटर है, क्योंकि उनके फैंस सही में एक रन इन के साथ आए. हमारे गेम में भी काफी कॉन्फिडेंट थे वो. तो मुझे तो ये लगता है कि यूनाइटेड का मतलब उसकी सराउंडिंग, उसका एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं है जितना भी आर्सेनल और टॉटनहम का चल रहा है. टॉटनहम का भी जब कॉन्टे आया था, एक फील गुड फैक्टर आया था, पर अब वो भी थोड़ा थोड़ा डाई डाउन कर रहा है. तो मुझे तो लगता है कि आर्सेनल करेगी, उनका फॉर्म भी बेटर है और उनका प्लेयर में कॉन्फिडेंस भी मेरे ख्याल से यूनाइटेड से ज्यादा है अभी. तो आर्सेनल लगेगी. Bro, I think that Spurs have, rather than Arsenal, Spurs have a more favorable fixture like going forward. So plus like you said कि अभी die down हो रहा है, नहीं, actually die down हुआ था, अब वापस ऊपर हो रहा है. I mean, if you see their recent form, Spurs और Arsenal का the form is better than United, I agree, but then United यार मतलब, I mean, it all boils down to it's Arsenal and Tottenham. I mean, you guys are really putting too much faith in Arsenal and Tottenham. They're known to bottle things. We all hope that they'll bottle down, but the thing is that
it has taken some time for Arteta to find the winning formula, but now that he has got that like consistency, I don't think that they'll bottle it so like easily. Spurs, ठीक है, Spurs is one club जो मतलब if you seen in the Conference League also, वो छोटी मोटी टीम से हार जाती है, फिर एकदम से एक मैच जीत जाएगी, ये सिटी को हरा दिया सिटी या अवे Burnley से हाँ हार सिटी गई। को हरा दिया एंड देन कॉन्फ्रेंस लीग में हार गई. तो स्पर्स स्टिल वी कैन से कि ठीक है इनकंसिस्टेंट होगी या हो सकती है, बट आर्सेनल ओवर द पीरियड ऑफ 10 मैचेस इफ यू सी दे हैव कंसिस्टेंटली परफॉर्म्ड. ठीक है, रेयरली दे हैव लॉस्ट और समथिंग. सो आई फील कि आर्सेनल हैज अ बिगर चांस. स्पर्स इज समथिंग कि अगर आर्सेनल ने बॉटल कर दिया, यूनाइटेड ने बॉटल कर दिया, तो शायद स्पर्स आ जाए, काइंड ऑफ अ थिंग. दैट्स व्हाट आई फील. and Spurs मेरे लिए like भी talking third about the होगी winning list में. formula, talking about the winning formula that Aditya was Gupta was talking about. So I think एक बहुत बड़ा question around Manchester United is that आगे क्या होने वाला है? Like okay, top four आए नहीं आए, what is the future of the club going to look like in the coming years? Is it going to be again another rebuild? Is it going to be Ralph Rangnick who is going to be the person जो अभी board के अलावा maybe team में he'll be having a big say? So I'll come to Laskar first. So तेरे हिसाब से United going forward, what is it that you want to change? Do you want a manager, specific manager जो आए and तुम्हारा पूरा philosophy change करे, या फिर do you think players exit करने चाहिए, या फिर do you think it's much deeper than that कि board में ही गलती है? And I'll want to hear first of all manager firstly, because Danik is interim. So who do you want as a manager at first? I wouldn't name any manager, because if I have to name a manager, it will be certainly Zidane, who's not coming. It's unreal. So I don't want to be unreal. But what are the characteristics of Zidane or maybe Pep or Klopp? It's like being authoritative, demanding. If you're not playing, whoever you are, you will be sitting at like on the bench. So यहाँ पे यूनाइटेड में इतने बिग शॉट प्लेयर्स हैं, या एटलीस्ट वो समझते हैं कि वो बिग शॉट है, कि they'll do like it's just like if you've seen post-match presentation of Gary Neville, it's just like throwing the manager under the bus, right? They'll do whatever they feel like, and they know that okay, Ranick 6 महीने के लिए है, ठीक है, ये जाएगा, कोई नया आएगा, we'll see. So obviously there will be changes, because अगर हम यूरोपा खेले, so some big stars might want to leave and new players would come in. And I feel कि manager के लिए अभी जो भी आएगा, he has to be very authoritative and demanding, whoever it is. Like that's the first thing. And if you talk in with respect to like changes within the club, I think अभी जो ये sports advising role में जो आएगा रहने, I feel it has to be given some time. ऐसा तो नहीं है, ठीक है, उसने फ्रंट एंड में देख लिया बीइंग अ मैनेजर कि कौन सा प्लेयर कैसे बिहेव कर रहा है एंड व्हाट should be done at a like a higher level, but obviously it will take some time as well. And I just fear one thing कि रैनिक ऐसा मैनेजर चूज ना करे जो उसको लगे कि उसके फिलोसफी पे जाता है, राइट? दैट इज अ बिग पॉइंट. अब मान ले वो आयाक्स का जो मैनेजर है एरिक, तो अगर उसको लगता है कि वो उसके फिलोसफी पे जा रहा है और उसी वजह से उसको चूज करना चाहिए, बिकॉज इफ यू सी वॉट एवर टीम ही हैज मेड अराउंड हिम, द एनालिस्ट गाय हु इज फ्रॉम यूएस, सो उसमें भी या सो उसमें भी he has worked with him, he knows about him, and he feels that he fits well in his philosophy, and that's why he chose him. So I feel thoda difference of opinion is good for the team or the club as well, because अगर ये तो यही बात होगी कि वो मैनेजर नहीं है और स्पोर्ट्स एडवाइजरी रोल में है, बट स्टिल उसी के हिसाब से चल रही है चीजें. I wouldn't want that. That's one thing. So मेरे like बाकी रही बात प्लेयर्स की, so I would say कि players only those players should be there who play for the batch. That's the thing. Yes, exactly. सही बात है. So अब Aditya, I'll come to you now, Aditya Gupta. So you know everything about what it means for to have players जो batch के लिए खेलते हैं. I think Liverpool is the shining example of that. So I think we can all agree कि Klopp was a very big reason for this kind of a change कि तुम्हारे players तुम्हारे batch के लिए खेलते हैं, because we all know Brendan Rodgers के अंदर कैसा था, Kenny Dalglish के अंदर कैसा था. So तेरे हिसाब से who is that Jurgen Klopp for Manchester United who should come in?
I mean, names have been mentioned: Eric Ten Hag, Mauricio Pochettino, Zidane, as Laskar was saying. Anyone else जो तेरे दिमाग में आता है who should come as Manchester United manager? That's a tough question, but मेरे लिए पोचेटिनो ही होगा वो यार, क्योंकि उसके पास नो हाउ है, इंग्लैंड में मैनेज कर रखा है। प्लस मुझे लगता है टेन हैग की लैंग्वेज प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं मैनेजर की आती है इंग्लैंड में। एंड टेन हैग मतलब कोई बड़ा क्लब मैनेज नहीं करा है, स्टिल पोचेटिनो पीएसजी करा है, टॉटनहम करा है, टॉटनहम को इंग्लिश गेम जानता है। यूएसएल फाइनल में लेके गया। तो टॉटनहम को जहां पर वो आज टॉटनहम खड़ी है वो पोचेटिनो की वजह से खड़ी है, और वो क्लब को एक बिल्ड करता है। ट्रॉफीज नहीं जिताई पर हाँ उसने बिल्ड तो करा है टॉटनहम को, जितना भी बिल्ड करा है। तो मुझे लगता है अभी यूनाइटेड को भी बिल्डिंग की जॉब मतलब ज्यादातर बिल्डिंग की है, बजाय कि एकदम से आते ही उनको ट्रॉफी चाहिए। ट्रॉफीज के लिए वो वेट हो सकता है, इतने साल करा है और भी कर सकते हैं वो वेट, पर हाँ अभी एक बिल्ड तो चाहिए। डू यू एग्री विद दैट विदुष, या फिर तेरे व्यूज डिफरेंट है कि पोचेटिनो या फिर जिडान या कोई और? So bro, if I go according to the recent reports, it almost looks like कि Eric Ten Hag is the one, is going to be the Interviews भी हो गए manager. उसके, हाँ. Yeah. So plus I feel that the job that he has done over at Ajax, especially, I'll not get into the whole rebuilding narrative around United, but he has rebuilt Ajax over a couple of years and 3 years. जब से वो Champions League का they had a good run. Given the changes United के board में अभी हुए हैं, I feel that वो एक more suitable candidate है job के लिए. Like I feel that he has that, you know, when you see City का, I'm sure we'll make another video explaining what Ten Hag's tactics are, how he can, you know, in the future. But he जब वो बायर्न की बी टीम को मैनेज करता था तो पेप गार्डियोला वहां पे बायर्न मैनेजर था. So there are a lot of things and lot of similarities if you see Ajax का गेम प्ले, सिटी का गेम प्ले, how वो पास करते हैं कैसा, और थोड़ा हाई टेम्पो भी है, which I feel स्पेशली जैसे हमारा अभी प्लेयर्स का चर्न आउट होने वाला है. लाइक आई जस्ट गो ओवर दिस वंस की इफ यू सी 1 to 11 के बीच में जो यूनाइटेड की जर्सीज है, 1 is there, he is gonna be staying. 2 is what, Lindelof, he's gonna be staying. 3 is Bai, he looks very likely to be leaving. 4 is Phil Jones, he looks like to be leaving. 5 is Maguire, issue in itself, so we'll keep it aside. 6 is Pogba, Pogba is mostly gonna leave. 7 is Ronaldo, if you don't qualify for the Champions League he's gonna leave. 8 is Mata, he's going to leave. 9 is Martial, he is most likely going to leave. He's already on loan. He's already on loan, is going to leave. 10 is Rashford, and being an English उसके player, अराउंड भी बहुत नैरेटिव चल रहा है. हाँ. हाँ, और 11 is Greenwood and not Greenwood, Prison FC. Yeah. Bye bye. So yeah, so I think a lot of changes are going to happen, and I'll trust Eric Ten Hag that Ten Hag too will come in. And that's a fair point. मेरे ख्याल से that's a very fair point. But one thing is there. Rangnick का नहीं चला तो how can you say कि Eric का चलेगा, kind of a thing. हाँ, that's also a fair point. Like मुझे I'll move on to like something similar topic यहाँ पे. तो now they're talking about the mass exodus. तो ये तो हमें पता है ये mass exodus होने वाला है. But do you think कि इतने सारे जो problems है United में, like नया मैनेजर आने वाला है, top 4 की श्योरिटी नहीं है, Oli भी was doing well, then उसे sack कर दिया, which was not in the club's plan, I feel. So इस सब के बीच में do you think some players are getting scapegoated now? Like जैसे we are talking about obviously Pogba, Bruno, Ronaldo. Bruno is going to probably sign a new contract now. But Pogba, Maguire, Ronaldo, and in general Ronaldo, क्योंकि उसने इतने points जिताए हैं तुम्हें Champions League के qualifiers, उसने literally तुम्हें, especially Ronaldo, because I think उसके आते ही ये stratosphere change हो जाता है कि तुम अब Ronaldo आ गया तो उसको हर मैच में जिताना है, irrespective of वो कैसे खेल रहा है, how United is playing as a team. So I'll come to Aditya Gupta first. So तो तेरे तो मजेदार है, रोनाल्डो आया, तेरे को बहुत व्यूअरशिप बढ़ गई लीग में, बहुत फैंस और बढ़ गए लीग में, बट तुझे पता है रोनाल्डो के आने से यूनाइटेड को कोई फायदा नहीं है. बट डू यू थिंक ही इज बीइंग स्केपगोटेड हियर इन दिस सिचुएशन? आई डोंट थिंक सो. मुझे तो लगता है उसकी वजह से काफी नेगेटिव इम्पैक्ट तो आया यूनाइटेड की एज अ टीम परफॉर्मेंस पे. इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो उसकी रही है, मेरे ख्याल से ठीक रही है, जो से एक्सपेक्ट था वो उसने करा है. बट हाँ, जो यूनाइटेड की ओले के अंडर आइडेंटिटी थी वो तो कहीं ना कहीं मतलब रोनाल्डो के आने के बाद सेम नहीं दिखी है. तो मुझे तो नहीं लगता कि वो है. और बाकी उसने कर्टिस के बाद जब कर्टिस को किक मारा उसके बाद कोई इज्जत नहीं करती.
How that moment was like, yes, I remember the 5-0 match at Old Trafford. I'll Yeah. come to Aditya Laskar now. हाँ, तो bro, तुझे भी लगता है क्या कि रोनाल्डो इज बीइंग स्केपगोटेड, या फिर जैसे गुप्ता बोल रहा है कि हाँ नहीं अच्छी बात है, वो उसने गलती उसकी है क्योंकि उसकी वजह से पूरा फिलॉसफी चेंज हो गया ओली का. See, I would like to address this issue from the beginning in the sense that जब Ronaldo आया, I don't think it was in the plans of it was in the plans of Oli. Ole. Ole. Ole, yeah. Yeah. And I think this was the season where maybe Ole would have achieved something, hopefully. But just because Ronaldo was going to City, which was very evident that time, and United fans or at least United board couldn't see that happen. So उनने उनको साइन कर लिया, and obviously commercial aspect तो है ही, वो तो अलग चीज है. Now the thing is that जैसे गुप्ता ने बोला कि रोनाल्डो को जो काम करना है वो कर रहा है. ही इज द टॉप स्कोरर ऑफ यूनाइटेड. ही इज फोर्थ प्रीमियर लीग में, अभी फोर्थ है along with few other गोल्डन बूट players. रेस के लिए. हाँ, या गोल्डन बूट रेस के लिए ओनली साला एंड आई थिंक वन मोर गाय, माने एंड जोटा. या तो अब तो एक चीज मुझे बता कि उसका काम वो कर रहा है. एंड you've seen this in Real Madrid, you've seen this in Juventus. अगर रोनाल्डो है, it has to go through him, and he'll get you the results. That's what it is like. It is like कि अगर रोनाल्डो है तो तुमको उसको काम देना है, उसको बॉस देना है और वो तुमको रिजल्ट्स देगा. प्रॉब्लम ये है कि स्केपगोट इसलिए हो रहा है अब कि हर चीज में, जैसे इसे विदुष ने भी पहले बोला था ये चीज हमको जब मोस्टली बात कर रहे थे कि अगर यूनाइटेड जीतती है तो रोनाल्डो ने जीता है, बट अगर यूनाइटेड हारती है तो रोनाल्डो ने हरवाया बिकॉज उन्हें भागा नहीं है समथिंग. सो इट इज अ वेरी मिक्स्ड डिस्कशन, बट आई थिंक कि रोनाल्डो को बेफालतू में बोला जा रहा है बिकॉज आई फील कि ही इज डूइंग हिज वर्क. दैट्स व्हाट. उसका काम गोल मारना है, वो गोल मार रहा है. Vidush, your thoughts? Yeah, so bro, to echo what Laskar said and what Gupta said, so I feel कि English players are the most protected endangered species in the world. They are protected like freaking endangered species, bro. Like, let's just see Shaw, Maguire and Rashford, Van Bissaka. भाई ये लोग इतना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इतना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, एंड येट whenever we underperform because of these players are not highlighted. इनके performance never get highlighted. It's always Ronaldo, हमेशा Ronaldo की गलती है. Yes भाई वो अपना काम कर रहा है, but the team around him is not working. And main अगर हम एक बैकबोन देखते हैं टीम का, तो डिफेंडर, कीपर, डिफेंडर सब जो भी आते हैं, वो बैकबोन ही अगर तुम्हारा ढंग से काम नहीं करेगा तो ओवरऑल टीम का जो स्ट्रक्चर है वो भी ढंग से काम नहीं करेगा. सो आई फील कि ये वो चिकन एंड एग वाला सिचुएशन है कि रोनाल्डो की वजह से यूनाइटेड अंडर परफॉर्म कर रही है, यूनाइटेड की वजह से इज द केस रोनाल्डो भी अंडर परफॉर्म कर रहा है. बट वही है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है, किसे क्या है, इट जस्ट नीड्स टू बी एनालाइज्ड मोर इन डेप्थ. But I'll just say what I said earlier, English players are most protected species in the world, and that's a fact. Hyped as well. Probably. Like इतने महंगे प्लेयर्स होते हैं, उससे सस्ते तो यार बाकी अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स उनसे सस्ते हैं यार. हाँ, English tax. Just take the example of Brandon Williams and Rashford. They earn more than Mane and Salah. So that's a statement in itself. So now seeing कि इतना सारा टर्मोइल है यूनाइटेड के अराउंड, लाइक तुम्हें पता नहीं तुम्हारा नया मैनेजर कौन है, तुम्हें पता नहीं तुम टॉप 4 में हो या नहीं, तुम्हें पता नहीं कि जैसे तुम्हारे प्लेयर्स रोनाल्डो, पॉगबा, मैगवायर अच्छा खेल नहीं रहा, कौन रहने वाला है कौन जाने वाला है. सो रियलिस्टिकली लाइक वन फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आई प्रेफर कि छोटे आंसर्स दो इसके. लाइक छोटे आंसर इन द सेंस कि तुम्हें क्या लगता है कि व्हाट इज द लीस्ट जब तक यूनाइटेड टाइटल जीत पाएगी, लाइक मतलब सपोज से इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इयर्स से, अगर टुडे वी आर इन व्हाट मार्च ऑफ 2022, तो तुम्हारे हिसाब से अ न्यू मैनेजर कम्स इन, व्हेन कैन ही एक्चुअली विन द टाइटल? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड. भाई मतलब दुनिया की सबसे बड़ी क्लब में आती है, प्रॉब्ली इंग्लैंड की सबसे बड़ी क्लब है ही, गुप्ता माइट आर्ग्यू, बट let's agree you Manchester United is Manchester United. So I'll come to Laskar first. तेरे हिसाब से
when does United actually win the title? Because वही तो point है खेलने का at the end of the day. I think next 3 years. 3 years. League. And Yeah. 3 years. You're talking about league, no? League. Yeah, league title. Yeah, 3 years minimum. Minimum 3 years. Not before that. Because it's not only developing United, but as you can see, other teams are also growing in strength. They'll also simultaneously buy players and try to perfect their system. So it is not कि United अपना कब ठीक कर पाएगी, it is also कि United कब ठीक करके उनसे आगे निकल पाएगी. That's the main point. और मौका कब मिलेगा, right? Like अभी 2-3 साल में तो हमें पता चल जाए, we'll have a better understanding कि क्लॉप या पेप का कब क्या सीन है और क्या हाँ exactly, all those things will also come into play कि पेप अगर चले जाता है या क्लॉप चले जाता है, that's a different thing altogether. But ऐसा तो नहीं होगा कि पेप चला गया और एकदम से सिटी एकदम क्रैश कर गई. That's not what I'm saying. But that's not happening. That's what about you, Vidush? What about you, Vidush? See, I feel that as I listed out earlier कि इतने सारे प्लेयर्स जाने वाले हैं और इतने सारे प्लेयर्स आने भी चाहिए. So एक ट्रांसफर विंडो में तो हम 200-250 मिलियन स्पेंड नहीं करेंगे और it's unrealistic. So I feel that it will be spread out across 4 transfer windows. So that leaves us 2 full seasons, including this summer with a new manager. And इस विंटर में I am not sure because of the World Cup क्या होगा, कि विंटर ट्रांसफर क्या होगा, but I feel कि ये 2 साल तो we'll forget. We'll happily, I'll support the new rebuild under Ten Hag, which is more likely to happen. And 2 season खत्म, 3rd season में जान लगा के title. Let's go for it. Say now I come to Gupta. So मैं चेल्सी फैन हूँ और तू लिवरपूल फैन है, तो हमारा बस है तो यूनाइटेड कभी ना जीते लीग. बट तेरे हिसाब से रियलिस्टिकली यूनाइटेड कब जीत सकती है लीग? एंड नया मैनेजर आया, नया रीबिल्ड, न्यू प्लेयर्स, तो व्हाट इज द मिनिमम दैट यू थिंक कि मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स जिसमें लगेंगे यूनाइटेड को लीग जीतने में? ईयर्स तो नहीं बोलूंगा, पर क्लॉप और गॉर्डियोला जब तक हैं, जब तक तो नहीं जीत रहे हैं. उसके बाद ये सब चले जाए, उसके बाद पता नहीं ना कि क्या होगा, कि हमारे पास जेरार्ड आएगा, सिटी कौन लेगी कौन नहीं लेगी. प्लस चेल्सी हमेशा कहीं ना कहीं घुस ही जाती है यार टाइटल में. इतने साल चेल्सी भी नहीं रहेगी बिना टाइटल के. पर हाँ, जब तक ये दोनों हैं तब तक तो नहीं जीत रहे. उसके बाद तक सो ब्रो, जब तक पेप और क्लॉप है तब तक यूनाइटेड नहीं जीतेगी या तब तक कोई भी नहीं जीतेगा? तब तक कोई भी नहीं जीतेगा. टूकल ब्रो जीतेंगे भाई. चेल्सी हो सकता है, चेल्सी हो सकती है, बट इनके टीम के अलावा तो मुझे नहीं लगता. तो आई थिंक अगर पेप 1-2 साल में चले जाएंगे तो कह रहे कि तब हम 24 है शायद से दोनों का. 24 है दोनों का, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है. Title will come back, bro. So 25 is again 3 years as we have suggested. But according to you, Nakul, according to you, I feel if United get this managerial decision wrong, I don't know what right or wrong of genuinely, you see कि Zidane में कोई experience नहीं था, he was right essentially, but Mourinho में इतना experience था, he was wrong for both Tottenham and United at the end of the day. So right wrong का मैं define नहीं कर रहा right wrong क्या होता है, because maybe it's United बहुत complicated club है, मुझे ऐसा लगता है. But if United don't get this appointment right, I think 2025 तक बाय बाय बोल दो टाइटल के लिए. तुम नहीं जीतने वाले 2025 तक, क्योंकि क्लॉप है, गॉर्डियोला है, कॉन्टे भी है. Let's be honest, I don't think टॉटनहम टाइटल जीतेगी, but they will be, अगर कॉन्टे रहेगा तब तक that's a different story, but कॉन्टे है लीग में. मेरा एक बहुत जेन्युइन फिलोसफी है अबाउट टाइटल्स इन द प्रीमियर लीग और इन एनी लीग फॉर दैट मैटर, कि बेस्ट मैनेजर वाली टीम टाइटल जीती है. टीम जितनी भी अच्छी हो, यू मैनेजर चाहिए तुम्हें, मैनेजर जो एक्चुअली, क्योंकि इतना बड़ा सीजन है, over 9 to 12 months, you have so many, you go to Crystal Palace away, you go to Wolves away, you have to have City at home. इतने सारे वेरिएशंस, कोई इंजर हो गया, कोई हो गया, तो ये मैनेजर एंड टैक्टिक्स पे ही डिपेंड करते हैं मेरे ख्याल से. तो सो 2025 तक तो if United don't get this managerial appointment right, they cannot win the title मेरे ख्याल से. That's fair enough. तो एक चीज है इसमें कि क्लॉप और गार्डियोला का प्लेइंग स्टाइल काफी सिमिलर है. So are you suggesting कि No, I mean they win. मतलब they play to win, bro. मतलब simple. हाँ, playing style जो भी है वो बहुत similar है. So are you saying that कि ऐसा टाइप का ही मैनेजर चाहिए जो उनसे compete कर सके? I think stature में चाहिए ऐसा मैनेजर, कि stature में कि when you see कि
पेप एक इंटरव्यू दे रहा है, दिख जाता है भाई कि मतलब उसके प्लेयर उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। क्लॉप को इंटरव्यू देता है, वो इंटरव्यूअर डर जाता है उससे कोई क्वेश्चन पूछने के लिए। तो वो स्टैचर तो मैं, तू पहले बोल रहा था एक समवन हु अथॉरिटेटिव, वो तो चाहिए ही 100% मेरे ख्याल से, इन टर्म्स ऑफ competing इन द मीडिया साइड, द प्लेयर्स, द रिक्रूटमेंट वगैरह। बट इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स ऑल्सो, ऐसा भी नहीं है कि ये लोग सिर्फ इस सब में अच्छे हैं, टैक्टिक्स में अच्छे नहीं, ये लोग टैक्टिक्स में और भी बाप है मेरे ख्याल से। तो इनको तो बीट करने के लिए पता नहीं कोई, आई डोंट नो मैन, आई रियली डोंट नो, बट यस पोचेटिनो कुड बी द वन मेरे ख्याल से। as our channel suggests, no sitting on the fence. So as a moderator, I have the authority to say कि कौन fence पे बैठ रहा था आज, बिल्कुल भी he was not giving any ढंग के answers, या फिर who was not very authoritative in their answers. So I think Aditya Gupta was very clear कि भाई क्लॉप एंड पेप के बिना तो मैं उनसे पहले तुमने जीतने वाले, तो that's not sitting on the fence, वो तो उसने बोल दिया सीधा सीधा। लस्कर रियलिस्टिक नहीं था इन हिज अप्रोच, बोल रहा था जिडान चाहिए, वो नहीं आने वाला यार, तुझे पता है। सो तो मैंने कहा कि वो मतलब अनरियलिस्टिक है, आई सेड दैट वाज अनरियलिस्टिक, आई जस्ट सेड हाँ, कि बट कोई देन अथॉरिटी तेरे मैनेज को चाहिए। ऑलरेडी पता है, तेरे को ऑलरेडी पता है कि अनरियलिस्टिक है, तो फिर से सजेस्ट करना व्हेन यू गिविंग अ चांस, तेरे को चांस मिला कि, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा बहुत सिटिंग ऑन द फेंस है, मेरे ख्याल से, तेरे ख्याल से शायद ना हो, बट वही, मैं मॉडरेटर हूँ तो वही पॉइंट है आज। एंड विदुष वाज क्वाइट क्लियर अबाउट टेन हाग कि उसको टेन हाग चाहिए एंड मैन यूनाइटेड विल फिनिश इन द टॉप 4। वो काफी रियलिस्टिक, आई डोंट नो रियलिस्टिक था, बट ही वाज वेरी ओपन विद उसके थॉट्स। सो ब्रो लस्कर, तेरे को मिल रहा है ब्रो आज, डोंट सिट ऑन द फेंस एनीमोर। अपना कुछ व्यू ऐसा ला जिसमें लोग एक्चुअली समझे कि नहीं भाई इसको ये चाहिए, इसको ये नहीं चाहिए। चलो गाइस, सो दिस वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड इन अ नटशेल। chaotic but a very huge club जिसके you can hate it, you can love it, but you can never ignore it. So hated, adored but never ignored, वो United fans बहुत famously बोलते रहते हैं। But आजकल anyway, थोड़ा कम बोल रहे हैं। thanks. So that's a wrap guys. We'll stay tuned, we'll get back with much amazing content and मिलते हैं आप लोगों से, bye bye. See you in the next video, bros. See you in the next video, bye. Bye.